डेजर्ट हॉक्स से है। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त परेड रफ़ीउल्लाह ड्रिल स्क्वायर में दाखिल होने को तैयार है। परेड में शामिल कंपनियों से आगे बैंड का दस्ता है। इस दस्ते की क़यादत बैंड नायब सूबेदार मोहम्मद अमीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ब्रास बैंड से है। कदम उठाओ इस तरह ज़मीं का दिल दहल उठे, वो नारहाए कर्म हो के रंगे चरख जल उठे। कहाँ की गोर क्या कफन, पढ़े चलो
मुजाहिदीने सफ शिकन, बढ़े चलो, बढ़े चलो। क्वार्टर गार्ड से रफीउल्लाह ड्रिल स्क्वायर की जानिब बढ़ते हुए ये शाह सवार मेजर माहद अहमद, एडजुटेंट फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन कायद आजम ओन हैं, जिनका ताल्लुक 27 सिंध रेजिमेंट शेर हैदरी बटालियन से है। एडजुटेंट परेड चार्जर बुर्राक पर सवार हैं, जो आज 14वीं मर्तबा परेड में शामिल हो रहा है। एजुटेंट की ड्रिल स्क्वायर में आमद के बाद सूबेदार मेजर परेड की क़यादत उनके सुपुर्द करेंगे। एडजुटेंट परेड चार्जर बुर्राक पर सवार हैं, जो आज 14वीं मर्तबा परेड में शामिल हो रहा है। एजुटेंट की ड्रिल स्क्वायर में आमद के बाद सूबेदार मेजर परेड की क़यादत उनके सुपुर्द करेंगे।
ख़वातीन व हज़रात, कौमी परचम, कायदे आज़म बैनर और अकेडमी निशान परेड ग्राउंड में अपनी मुंतखब करदा जगह की तरफ रवां दवां हैं। आपसे गुजारिश है कि जब कौमी अलम आपके सामने से गुजरे, आप अपनी नशिस्तों से एहतरामन खड़े हो जाएं। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। देगों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा। तूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है।
झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, के शाही बनाता नहीं आशियाना। Ladies and gentlemen, may I inform you that the sponsor battalion of the passing out course is 1st Pakistan Battalion, Qaid-e-Azam's own. This cadet battalion is presently being commanded by Lieutenant Colonel Hassan Shehzad Dogar, who was commissioned in the meritorious 70 Punjab Regiment and later on commanded 77 Punjab Regiment, Al-Azwar of Pakistan Army. Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Hassan Shehzad Dogar, Battalion Commander, 1st Pakistan Battalion, Qaid-e-Azam's own, approaches the saluting dais. Ladies and gentlemen, we now await the arrival of Major General Iftikhar Hassan Chaudhry, Hilal-e-Imtiaz Military, Commandant Pakistan Military Academy. The general officer belongs to 30 self-propelled heavy regiment artillery. Major General Iftikhar Hassan Chaudhry, Hilal-e-Imtiaz Military, has the honor of serving on both eastern and western borders of the motherland. Having served as Director General Pakistan Rangers Sindh and Director General Military Intelligence, the General Officer is currently performing his duties as 40th Commandant of Pakistan Military Academy. Ladies and gentlemen, Major General Iftikhar Hassan Chaudhry, Hilal-e-Imtiaz Military, Commandant, Pakistan Military Academy, approaches the saluting dais.
वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, जर्ब है कारी। अगर हो जंग तो शेराने ग़ाब से बढ़कर, अगर हो सुलह तो राना गजाल तातारी। Ladies and gentlemen, you now hear the trumpets that herald the arrival of the reviewing officer of today's parade, Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military, Hilal-e-Jurrat, Chief of Army Staff. All are requested to rise on arrival of the reviewing officer. Ladies and gentlemen, the reviewing officer of today's parade, Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military, Hilal-e-Jurrat, Chief of Army Staff, approaches the saluting dais. ख़वातीन व हज़रात, अब परेड एजेंट मेहमान खुसूसी को परेड के मुआयने की दावत देंगे।
मुअज़्ज़ज़ ख्वातीनो हज़रात, आज के मेहमान खुसूसी जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री, हिलाले जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, हिलाले इम्तियाज मिलिट्री, कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, लेफ्टिनेंट कर्नल हसन शहजाद डोगर, बटालियन कमांडर फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन, ड्रिल सूबेदार मेजर मोहम्मद अफजल और एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुज्तबा आरिफ राजा के हमरा 152 पीएमए लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स के चाको चौबंद दस्तों का मुआयना करेंगे।
ख़वातीन और हज़रात, आज पास आउट होने वाले कैडेट्स में 40 कैडेट्स दोस्त ममालिक से हैं, जिनका ताल्लुक श्रीलंका, इराक, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कतर, मालदीव, माली, नेपाल और यमन से है. Ladies and gentlemen, today's passing out parade includes 40 cadets from friendly countries. These cadets are from Iraq, Maldives, Mali, Nepal, Palestine, Qatar, Sri Lanka, Nigeria, Bangladesh, and Yemen. ख़वातीन और हज़रात, अब पुरानी और नई आला कंपनी के अलमबरदार अपनी जगह लेंगे. ख़वातीन और हज़रात, अब मेहमान खुसूसी आला कंपनी को परचम अता करेंगे. पुरानी आला कंपनी, शब्बीर कंपनी. नई आला कंपनी, बाबर कंपनी. Ladies and gentlemen, Babar Company has been awarded the Qaid-e-Azam banner. This banner is conferred upon the champion company for leading the others in all training and sports competitions during the session. The tradition for the award of banner goes back to 1948, when the second Governor General of Pakistan, Khwaja Nazimuddin, awarded the first banner to Khalid Company.
ख्वातीनो हजरात, अब परेड सफ कॉलम में जल्दी चल से सलामी चलेगी। आपसे गुजारिश है कि जब कौमी परचम और पीएमए निशान आपके सामने से गुजरें तो आप एहतरामन खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, now the parade will march past in quick time. You are also requested to rise when the national standard and Pakistan Military Academy banner pass in front of you. जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। तेरे अब्रुओं की जुम्बिश, तेरी आंख का इशारा, तेरे दुश्मनों पे आफत, तेरे कहर का शरारा, यही बांगपन है तेरा, यही तेरी कजगुलाही, मेरे सरबकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई,
दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। ना सिर्फ माँ बहन बेटी का फख्र हैं ये, यही तो मिल्लत की असल चमक है ये। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपके सामने से गुजरने वाला दस्ता परचम पार्टी कहलाता है। ये चाको चौबंद और मुस्तैद नौजवान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की मुक़द्दस तरीन रिवायतों के अलम बरदार हैं। इनमें सबसे आगे कौमी अलम है, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को सन 1961 में दिया गया। इनके साथ पीएमए निशान है, जो पीएमए की चारों बटालियंस का मुश्तरका इफ्तिखार है। तू वतन की आबरू है, तू वतन का है सहारा। मेरे सरबकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही। ये तेरा यकीन मुहकम, तेरी हिम्मतों की जान है। तेरे बाजुओं की कुव्वत, तेरे अज़्म का निशान है। तू ही राही, तू ही मंजिल, तू ही मीरे कारवां है। ये ज़मीं तेरी ज़मीं है, ये जहां तेरा जहां है। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ए अर्ज़े पाक, तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। सिपाही हूं नहीं मैं काम करता नाम की खातिर,
वो कैसा खेल जो खेला गया इनाम की खातिर। वहां का शोर मीठे साज की झनकार है मुझको, कि जिस मिट्टी से मैं उठा हूं उससे प्यार है मुझको। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। अगर हो जंग तो शेराने ग़ाब से बढ़कर, अगर हो सुलह तो राना ग़ज़ाल तातारी।
मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जब बैंड कौमी तराने की धुन बजाए तो आप एहतरामन खड़े हो जाएं। वर्दी में मलबूस हजरात कौमी परचम को सल्यूट करें और परेड को नीचे फंग का हुक्म दिए जाने तक खड़े रहें। ख़वातीनो हज़रात, आपने देखा परेड एजुटेंट ने परेड की कमान एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा को सौंप दी है। इस एहतसास लम्हे के बाद परेड की जिम्मेदारी खुद ग्रेजुएटिंग कैडेट्स ने संभाल ली है, जो आज अस्करी तरबियत के इख्तिताम पर पाक फौज की मुख्तलिफ यूनिटों में दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा संभालने के लिए तैयार हैं। Ladies and gentlemen, you have just witnessed that Adjutant has handed over the parade to Academy Senior Under Officer Ahmed Mujtaba Arif Raja. Now the graduating cadets have taken over the responsibility of the parade.
who, after successful completion of their military training, are ready to embark upon the sacred duty of defending the motherland. उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
الخيل ترهبون به عدو الله عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون इब्तदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तैयार रखो अपनी ताकत, अपनी पूरी कुव्वत और जराए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उनके दिलों पर जो दुश्मन हैं अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मन, और उनके अलावा कुछ और जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह की राह में, उसका सिला तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज नाइंसाफी नहीं की जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं जिद के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा
और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत, ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और ये कि मैं बर्री, बहरी या फिजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। आमीन। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में ये एजाज़ात दिए जाएंगे। एजाज़ी शमशीर, ये एजाज़ 152 PMA लॉन्ग कोर्स में मजमूई कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट को दिया जाएगा। सदारती तलाई तमगा, ये एजाज़ 152 PMA लॉन्ग कोर्स में मजमूई कारकर्दगी के लिहाज से दोइम आने वाले कैडेट को अता किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन अवार्ड, ये एजाज 152 PMA लॉन्ग कोर्स में मजमूई कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन फायरर कैडेट को अता किया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज मेडल, ये एजाज 152 PMA लॉन्ग कोर्स में दोस्त मुमालिक के बेहतरीन कैडेट को दिया जाएगा। कमांडांट की एजाजी छड़ी, ये एजाज 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स में मजमूई कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन कैडेट्स को अता किया जाएगा। Ladies and gentlemen,
Now the reviewing dignitary of today's parade, Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military, Hilal-e-Jurrat, Chief of Army Staff, will give away the awards to the best cadets. From 152nd PMA Long Course, Sword of Honor is awarded to Academy Senior Under Officer Ahmed Mujtaba. From 152nd PMA Long Course, President's Gold Medal goes to Battalion Senior Under Officer Zohair Hussain. Aldım sir. Aldım sir. From 152nd PMA Long Course, Chief of Army Staff Marksman Award is awarded to Gentleman Cadet Sayyid Hashir Hassan. Aldım sir. Assalamualaikum sir. From 37th Technical Graduate Course, Chief of Army Staff Kane is awarded to Course Under Officer Shahid. Aldım sir. Assalamualaikum sir. From 152nd PMA Long Course, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee Overseas Medal is awarded to Company Junior Under Officer Tekraj Rawat from Nepal. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. From 71st Integrated Course, Commandant Kane is awarded to Course Under Officer Abdul Hadi. Aldım sir. Aldım sir. From 26th Lady Cadet Course, Commandant Kane is awarded to Course Under Officer Hadia Fayaz. Assalamualaikum sir.
अस्सलाम वालेकुम सर। From 26th Lady Cadet Course, Commandant's Overseas Medal is awarded to Course Sports Sergeant Jannatul Mawa from Bangladesh. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। जो खौफ को अपनी ताकत समझते हैं वो रुकते नहीं, वो थमते नहीं। Ladies and gentlemen, the reviewing officer of today's parade, Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishan-e-Imtiyaz Military, Hilal-e-Jurrat, Chief of Army Staff, will now address the parade. Bismillahirrahmanirrahim. Major General Iftikhar Hassan Chaudhry, Hilal-e-Imtiyaz Military, Commandant Pakistan Military Academy. Excellencies, distinguished guests, faculty members, dear cadets, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my profound privilege and honor to review the passing out parade at Pakistan Military Academy. I extend warm greetings and appreciations to the immaculately turned out gentlemen and lady cadets for the outstanding display of professionalism and discipline. My compliments to the cadets from friendly countries of Bangladesh, Iraq, Mali, Maldives, Nigeria, Nepal, Palestine, Qatar,
Sri Lanka, and Yemen for successful completion of the formative training at this prestigious institution. This is a moment of pride for you and all of us, reflective of the strong bonds of military cooperation and international camaraderie. The award winners deserve special admiration for their outstanding achievements. You all owe gratitude to your mentors of this institution, which has a history and proud tradition of nurturing men and women of courage, wisdom, discipline, and sense of sacrifice. Pakistan Military Academy's role as a cornerstone of military excellence has always remained commendable, and the standards exhibited today are no less reflective of the same. Ladies and gentlemen, ever since the creation of Pakistan, the armed forces, with full support of the nation, have defended the external and internal frontiers of this great country with unflinching resolve, conviction, and pride. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyanu Marsus, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. With Allah's blessings and binding national resolve, people of all hues and colors, age, gender, ethnicity, or creed stood firm and tall like a wall of steel, leading to a renewed spirit of patriotism and national fervor, which prevails across the length and breadth of Pakistan. Our collective success has re-energized and strengthened the proud and illustrious memories of our earlier successes. Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Pakistan, on the other hand, gained deep respect and admiration of the people of Pakistan and international community because of the legitimacy and clear victory against a numerically superior adversary. Internally, it has further unified our nation and strengthened our resolve to defend against any threat, whether external or internal. It has reinforced the confidence, particularly amongst the youth, that the armed forces of Pakistan are an essential element of national power and trusted with the responsibility to protect the sovereignty and territorial integrity of the state. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. I very proudly salute the valor of the people of Pakistan, every soldier, sailor, airman, the brave men, women, children, and elderly who laid their lives during these testing times, and to the Ghazis who fought with utmost conviction to defend the motherland at all cost. The national leadership, bureaucracy, scholars, scientists, media, academia, and most importantly, the youth deserve rich tribute for standing firmly against aggression. Our Shohda, who have sacrificed for the creation and later preservation of this great country,
deserve highest recognition. We owe our deepest respect for the martyrs and their families, because of whom we enjoy freedom and independence. You are the heirs of martyrs. Live worthy of their memory. My dear cadets, you should all be absolutely proud of the fact that you are being commissioned in one of the finest armies across the world, which is second to none, respected by all and sundry. This demands your absolute loyalty to Pakistan, to the armed forces, and the sacred task being entrusted onto your shoulders. It warrants highest standards of courage, conviction, discipline, and professionalism. It demands your blood and toil and consistent hardship rise up to the expectations of the people of Pakistan and to the standards commensurate to the trust reposed in you. Remember, our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. Let me remind them that the bond between the people and armed forces is unshakable. For you all, nothing should be more sacred than the safety and security of the people of Pakistan, and no duty more binding than the defense of our beloved motherland. Ladies and gentlemen, the defense doctrine of Pakistan is predicated on credible deterrence and perpetual readiness, encompassing the full spectrum of capabilities. As a professional standing army, our conventional prowess through constant doctrinal and technological evolution has been optimized into a dynamic, integrated, and adaptive force. You should all understand the need for intellectual readiness and technological advancements, embrace innovation, lifelong learning, and adaptability to meet modern threats. The battle-hardened army, which has fought for over 2 decades in the sub-conventional domain, has successfully displayed its capabilities in conventional domain as well by delivering a swift and decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. Dear cadets, ladies and gentlemen, the world is witnessing increased fragility and volatility with a discernible shift towards violence as an instrument for attaining political objectives. Amidst the chaos, Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. Our relations with key global and regional powers, particularly Muslim countries, have further strengthened. Pakistan has persistently proven to be a key contributor towards peace and stability in the region and beyond. Our armed forces contribute immensely to United Nations peacekeeping missions across the globe.
The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Harman Sharifan, as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर. Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. Our relations with all other Muslim countries are thriving at an exponential pace. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security, and development. Ladies and gentlemen, having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its covering, hypocritical, and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that, like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. Rest assured that Pakistan is a peace-loving nation and shall ensure peace within and peace without. India's state-sponsored terrorism, oppression, and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic, and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. Ladies and gentlemen, the world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide, and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children, and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland.
For a just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign, and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Palestine's pain and Kashmiri's subjugation remain festering wounds on the conscience of humanity. Ladies and gentlemen, Pakistan's story is one of resilience, born of struggle, sustained faith, and sanctioned by its people. Pakistan has never been defined by the challenges we face, but by the courage and resolve with which we face them. Despite challenges, it has gradually but surely started to regain its rightful place in the Committee of Nations as a responsible state with immense significance and potential. Through relentless efforts of the government, we are now witnessing relative stability with positive economic indicators attracting investments in multiple domains from across the world. The treasures hidden beneath our land for decades have started to surface as a silver lining for our bright future. Our vibrant youth, filled with talent, is making marvels in multitude of domains. The armed forces of Pakistan acclaim highest respect from nations across the world. The overall geostrategic significance of Pakistan, beauty and splendor of its exotic landscape, and hospitality of its people, coupled with diplomatic, economic, and military success and wherewithal, Pakistan is destined to rise, inshallah. But remember that our journey is not finished. The enemy remains restless, but so does our resolve. We men in uniform shall always remain ready and arrayed to support the progress and prosperity of the people and the state of Pakistan and defend the ideological and physical frontiers of this great country as ordained by Allah Almighty. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allah indeed loves those who fight in His way in ranks as though they were a solid wall. As per Kai's historic remarks of January 1948, I quote, "We are all Pakistanis and citizens of the state, and we should serve, sacrifice, and die for the state so that we may make it the most glorious and sovereign state in the world." Unquote. Dear cadets, victory is not achieved by rhetoric, but by training, character, and the courage to stand firm and unyielding in the face of odds and challenges. Remain focused by making professionalism, discipline, and ethical leadership the hallmark of your personality. Be cognizant of the diverse array of threats within and beyond, which are proliferating via digital media, populist anarchism, and social subversion. Unfortunately, in the post-truth era in which we live, perceptions bear more weight than reality, and half-truths spread faster than facts. Your strength will lie in thinking critically and discerning fact from fictions. Do not become tools and victims of information disorder, encompassing fake news, misinformation, disinformation, and malinformation. You must develop clarity, as in today's world, clarity of mind is power. Dear cadets, ladies and gentlemen, the broad thrust of my message is a reassurance that given Pakistan's potential and rising stature, we need to take on the challenges with grit and determination and lead our country to its rightful destiny. Pakistan's flag will inshallah continue to rise because its defenders, that is Pakistani nation, never fail. At the end, I once again congratulate you all on being commissioned
and wish you the best for a promising yet challenging journey ahead. I also extend my profound compliments to your parents, guardians, and mentors for this remarkable accomplishment. May Allah be with us all. Ameen. Pakistan Armed Forces, Zindabad. Pakistan, Hamesha Paindabad. मुअज़्ज़ज़ ख्वातीनो हज़रात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी. Ladies and gentlemen, now the parade will raise national slogan. ख़वातीन और हज़रात, अब परेड कौमी परचम और पीएमए निशान लिए हुए आहिस्ता चल से परेड ग्राउंड से रुखसत होगी. Ladies and gentlemen, now parade will march off from Rafiullah Drill Square in slow march along with the national standard and regimental colors. Pakistan Military Academy cadets standing astride the red stairs will present first salute to graduating cadets.
वतन की राहों में बन के रहबर, जो आ सको तो यहाँ पे आना। सफ़े उदू में कहर का मंजर दिखा सको तो यहाँ पे आना। हमारी मंजिल लहू का दरिया, हमारा ईमान रज़ाए खालिक। खुदा के शेरों, कदम तुम ऐसे जमा सको तो यहाँ पे आना। ये दश्त तो सहरा, पहाड़ों दरिया ना रोक पाए हमारी मंजिल। लहू से अपने खिराज देने जो आ सको तो यहाँ पे आना। किया था मिट्टी से जो भी वादा, हमेशा हर पल है याद हमको। बज़ोरे इश्क़े जुनू वो वादा निभा सको तो यहाँ पे आना। कलंदराना सिफात हम में है, शोलाए जुल्फ़िकार हम में। उदू के लश्कर में बरक़े हैबत गिरा सको तो यहाँ पे आना। जो आ सको तो यहाँ पे आना। जो आ सको तो यहाँ पे आना। अगर रहवार हो तैयार फौजी शाह सवारों के, इरादे पस्त हो जाते हैं दुश्मन की नाकारों के। जिसे कहते हैं कैडेट, असल में लफ्ज़े क़यादत है। क़यादत उसको मिलती है जिसे ज़ौक़े शहादत है। ये सब फौलाद के बाजू बजाए खुद हैं तलवारें, जो इसका कूल में रखते हैं आकर सान पर धारें। जज़ाकल्लाह ए आली तबारा, ए फिदाकारो, जीवशे फौजे पाकिस्तान के अफसर सिपादारो। इधर गाजी का जज्बा है, उधर शौक़े शहादत है। ये जीना भी इबादत है, ये मरना भी इबादत है। मुबारक हो कि तुम इस दर्सगाह से कामरान निकले। सरे मैदान यहां से सूरते तैगे रवां निकले। ख़वातीन और हज़रात, अब आप देख सकेंगे रेड स्टेयर्स के साथ खड़े पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कैडेट्स अपने सीनियर्स को, जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, पहला सल्यूट पेश करेंगे। Ladies and gentlemen, now you will witness Pakistan Military Academy cadets standing astride the red stairs, who will present first salute to their seniors who are graduating today. सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसी रोजो शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे जमानो मकान और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं।
तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल न हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रुईदगी मुहाल न हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, और उस हुस्न को तशवीशे माहो साल न हो। हर एक फर्द हो तहजीबो फन का औजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।